Dear students, in this particular video, we are going to discuss the very important questions from the chapter Metals and Non-Metals for Class 10 Science. Okay, so starting with the very first question, we have, why is sodium kept immersed in kerosene oil? Why is sodium kept immersed in kerosene oil? तो इसका आंसर we have already discussed in our previous lectures. Something related to reactivity series. Did you remember? So जो हमारे पास metals होते हैं, metals like potassium and sodium are very reactive. That they can catch fire. That they can catch fire if they are kept open और they are kept in the open. अगर हम उन्हें केरोसिन ऑयल में इमर्स करके नहीं रखें, ऐसे ओपन में ही रख दें, तो ये क्या करेंगे? बर्न करना स्टार्ट कर देंगे, आग लग जाएगी वहां पर. ओके, तो हेंस टू प्रोटेक्ट देम, and to prevent accidental fires. They are immersed in kerosene oil. तो हमारे पास क्या है बच्चे, देखो जो हमारे पास कुछ मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटाशियम, दे आर वेरी रिएक्टिव. वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर हम उन्हें ओपन में रख दें तो वहां पर आग लग सकती है. तो देखो अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, सबसे पहले तो क्या होगा कि जो हमारे पास वो मेटल है या फिर वो जो हमारे पास एक एलिमेंट है उसका नुकसान होगा. राइट, अगर हम उन्हें ओपन में रख रहे हैं एंड दे आर कैचिंग फायर, इट विल लीड्स टू द रिडक्शन in the amount of that particular element on the earth, है ना. तो जो हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, ऐसे कुछ और रिएक्ट्स है, अगर वो ऐसे ही स्पॉइल हो जाए, ऐसे ही खराब हो जाए, तो इससे क्या है, हमें लॉस होगा. राइट, एक तो ये हो गया कि अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो क्या होगा कि इससे उनका लॉस नहीं होगा. राइट, और सेकंड क्या है कि हमारे पास जो एक्सीडेंटल फायर्स होती हैं हम उसे भी प्रिवेंट कर सकते हैं. कैसे? बाय कीपिंग द रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम इन केरोसिन ऑयल. Okay, so next we have, which gas is released or liberated when dilute hydrochloric acid reacts with reactive metal? जब हमारा जो HCl है, that is strong acid, when reacts with reactive metal, तो हमारे पास कौन सी गैस लिबरेट होगी? ये हमने एसिड एंड बेस के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था. इट्स आंसर इज, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे. व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ salt and liberation of which gas? It is हाइड्रोजन गैस. राइट, और इसे हम टेस्ट कैसे करते हैं? बाय ब्रिंगिंग द टेस्ट ट्यूब नियर टू दी सोप बबल्स. इफ द gas
burns with pop sound, then it is hydrogen gas. Otherwise, hydrogen gas is not present. Okay, so next question we have. What would you observe when zinc is added to? ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन जो अब इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ये हमने ऑलरेडी की हुई है। तो जिन्होंने तो हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देखी हैं, उन्हें तो ये जरूर पता होगा, और अगर नहीं देखी हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देखो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि जब हमारा जिंक है आयरन टू सल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है, तो कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ऐसे क्या ऑब्जर्व किया जाता है? तो वी हैव जिंक प्लस आयरन सल्फेट, it leads to the formation of zinc sulfate plus iron. Right? तो हमारे पास जो जिंक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एंड दैट इज व्हाई जिंक विल रिप्लेस आयरन फ्रॉम iron sulfate solution and will leads to the formation of zinc sulfate, and iron will be left alone. Right, so ये सब जो भी है concept, it is revolving around reactivity series. तो अगर तो आपने reactivity series अच्छे से learn की है, then you can answer this question very easily. Otherwise, it is going to be a big problem for you guys, right? Okay, next question we have. Why do ionic compounds have high melting point? जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनका आयनिक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा क्यों होता है? सो इट्स आंसर इज बिकॉज ionic compounds are formed by, कैसे बनते हैं जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं? by the attraction force of two opposite ions. हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं उसमें ऑपोजिट आयन की फॉर्मेशन होती है ना, पहले जो ऑपोजिट आयन्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तभी जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है ये फॉर्म होते हैं। Therefore, a considerable amount of energy is required to break this strong bond. देखो हम इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या हुआ है, एक आयन पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, राइट? दिस इज नेगेटिव आयन। तो हमारे पास जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स है ना, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दे विल हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन. सो देयरफॉर इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए विल नीड large amount of energy. Here we need large amount of energy. किसके लिए? To break the strong bond. Okay. So this was the reason why ionic compounds have high melting point. Next question we have, this is memory based question. So let's check how many of you had a good memory. So the question is, which metals do not corrode easily? तो कौन से मेटल्स हैं ऐसे जो जल्दी करोजन की तरफ नहीं बढ़ते, मींस जो करोड जल्दी नहीं होते हैं? तो ऑब्वियसली लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ही होने वाले हैं. तो कैन यू नेम एनी 2 और एनी 3 लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स? Least reactive elements do not corrode easily. And can you name any 2? Not 3, we'll consider only 2. Write it fastly in the comment section if you know any 2 of the elements which do not corrode easily and are reactive and are less reactive elements. For example, gold, that is Au, and copper, that is Cu. Okay, so my dear students, how many of you have given the answer correctly? The very next question we have, what are amphoteric oxide? Very important point. What are amphoteric oxides? तो हमारे पास amphoteric oxides कौन सी होती हैं? The oxides, those oxides जो acid and base दोनों की तरह react कर सकती हैं, which behave as both acidic as well as basic oxides are called amphoteric oxide. For example, इसमें हम examples consider करेंगे like Al2O3. अगर हम इसे HCl के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, it will lead to the formation of 2AlCl3 plus 3H2O. Whereas अगर हम इसके रिएक्शन बेस के साथ में करवाएंगे, that is हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसीडर कर लेते हैं, 2 moles of sodium hydroxide, it leads to the formation of 2 moles of. Okay, so this is the reaction that will take place when it reacts with any base.
तो यहाँ पर जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है दैट इज रिएक्टिंग एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा zinc oxide is also an example of amphoteric oxide and its reaction can also be written right here and here। यहाँ पर हम एसिड की रिएक्शन लिख सकते हैं, यहाँ पर बेस की रिएक्शन। बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस मेनी एग्जांपल्स बिकॉज एग्जाम में आपको एक एग्जांपल लिख के आनी है। अगर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं दैट जिंक ऑक्साइड इज आल्सो सिमिलर टू एल्युमिनियम ऑक्साइड। Why? Because both of these have a similar property that is of being a amphoteric oxide, right? Next question again is a little bit memory based question, so let's check। What type of oxide is formed when nonmetals react with or we can say combine with oxygen। तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होने वाली है? सबसे पहले तो हम रिएक्शन ही लिख देते हैं, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कौन सी ऑक्साइड होगी? एसिडिक और बेसिक? दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक ऑक्साइड, राइट? जैसे हमने रिएक्शंस में पढ़ा था जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे, सेम वे में नॉन मेटल जो है हमारा, ये हम कंसिडर कर लेते हैं सल्फर इन सॉलिड स्टेट and oxygen in gaseous state leads to the formation of acidic oxide। This oxide is acidic in nature।